All right. Oops, present. All right, can everybody hear me okay and see my screen? Yes, we can see your screen. Perfect. Now, where did I leave off before I was kicked off? I think you should start from the beginning. All right. All right, well, good evening, everybody. Thank you for joining. Seems like we have quite a few participants, so yeah, I'll jump into it again. So my name is Heather Douglas. I'm a graduate and a recruiter at Algoma University. And I get the opportunity to come and visit Pakistan as well. So Farouk and I were able to run a little fair together with his team at Education Concern in Lahore a couple months ago, which was lovely. I'll just introduce you to the rest of the team. So other than me, this is who works at Algoma University to help our international students join. If you've already submitted an application, some of these names might be familiar. So I'll jump in and talk a little bit about Algoma University and what makes us different from others. So we are one of 21 of the publicly funded universities within Ontario. Ontario is the middle province in Canada. We are the home to the 3 biggest lakes in the world. And Algoma University has 3 campuses spread kind of from the top to the bottom of Ontario. So our most northern campus is Timmins, our middle campus is Sault Ste. Marie, and then we also have Brampton. So Brampton's probably a familiar name. There's quite a large diaspora of people from Pakistan living in Brampton. And it's also the one that's closest to the Greater Toronto Area, or the GTA. So I'll just briefly touch on Sault Ste. Marie. This is our flagship campus. This is where Algoma University started. If you were into nature and like greenery like me, this is probably the place you'd feel most at home. There is plenty of walking trails, forests, hiking spots all around, kind of nestled around the campus. It's also where most of our undergraduate programs are offered. There is the science labs here, all of the administrative help, and the kind of the original founding story of Algoma University at this campus. So if you're a little bit more cosmopolitan, and if you're living somewhere like Lahore or Karachi, then you might be more comfortable to living in a big city. You can see from this video, if it's running properly on your screen, you can see how newly renovated and beautiful this campus is. More than that, it's located in the downtown region. So it has partnerships with all the businesses surrounding it, which is great for the co-op opportunities offered with every single one of our degrees. It also allows you quick access to downtown Toronto. So students get a greatly reduced cost of the transportation to get to the downtown Toronto. And while you're there, you can, of course, go see the CN Tower, take another train to go see the Niagara Falls, all the things you have to do when you're in Canada. So let me just talk a little bit about the programs we offered. So I'll just mention that this little Thunderbird is the symbol we're using to show which courses are offered on both our Brampton and Sault Ste. Marie campuses. The ones with the stop sign or without any symbol are only offered in the Sault Ste. Marie campus or our Timmins campus. So if we had to get a little bit creative, having 3 different campuses to show and communicate which programs are offered where. But of course, if you have any questions about this, the Education Concern team is very well educated on what we offer where, so you can always ask them. If you're interested in doing education overseas, you've likely already figured out what it is you want to study. But if you need a little bit of inspiration, you can scan through this list and then do a little bit more research on your own time. There are some unique ones that you might not have seen before, such as esports, aviation management, maybe this computer game technology. So those are a little bit more off the beaten path and a little bit more specialized.
So if these are areas that kind of pique your interest, then definitely go onto our website and read through what exactly is involved in those. I myself graduated from the biology program, so very partial to this. I think it was an awesome degree. It allowed me to do some really amazing things within the environment. That was kind of my area of interest. But I've also had a lot of friends go off and do really cool jobs within the medical science field. So lots of opportunities. I will also touch on our graduate certificates. So these are very popular for students who have already completed a degree, who have already completed a master's, but would like to branch out and expand their areas of expertise in other areas. Important for me to mention, these are technically still undergraduate courses. They're not at the they're not at the graduate school level. They're a collection of undergraduate courses combined into short certificate programs to help expand your knowledge further. So if you're interested in coming and doing a quick 1 or 2 year program and then getting that postgraduate work permit to really start practicing your broadened skill sets, these are an excellent way to go. We just very recently launched our graduate programs. So we have a very new one in computer science. I was telling Farouk before we began, the recruitment for the graduate schools are outside of my purview. So I don't do any recruitment for it. And they're so new, I don't even really have much information for you on it. This is more run by the faculty. So I can say that if you do a degree in the computer science, or if you do a graduate certificate in the information technology, there's a pretty good pathway into these grad programs, but I don't really have much information beyond that. I can, of course, point you in the right direction and help point our team at Education Concern in the right direction, but I won't be able to answer very many questions on it. So let's talk a little bit about admissions requirements. So for the bachelor degrees, we're obviously looking at students coming right out of high school. If you're coming from the public school board, you'll notice that our the entrance grades required are very accessible, very reasonable. And of course, this differs depending on the curriculum you have done. So if you've done the IB or if you've done Cambridge, this will vary a little bit. There is specific admission requirements for each of these curriculums on the website. I'll touch briefly on the Cambridge school system. I know this is quite popular in Pakistan. And so anytime a student achieves a C or higher, they also receive transfer credit. So you can receive up to 12 credits, which is the equivalent of 4 classes, which will save you quite a bit of money. It's effectively like a scholarship, and it reduces the time you have to do for your degree. So we try really hard to reward hard work. And so great job if you're a student who is achieving these high grades. So graduate certificates. So these are for students coming that already have a degree or a diploma. If you've gone to a polytech school and you've received a high grade on that diploma, a 70 or higher, then you will be admissible. 65 for project management and then 60 for the IT. And then of course the bachelor's degrees follow a similar kind of pattern. So prerequisites. For our BBA, we do require that students have a math. If not a math in their final year, at least in their middle school year, their grade 11 year. If you do not have a math in that final year, we do have a conditional offer we can send in which a student will complete math, foundational math, once they are a student at the university. And you can kind of just, I know each and every one of you have your own interests, so you can just scan through this, get an idea of what you need. And if you're lacking what you need, there's still time to work with Farouk and the EC team to get you where you need to be and open a conversation with us so that we can help you get to where you need to be as well. Tuition fees. This is an important one. So we've included them in both Canadian and USD.
Obviously, the rate between our two currencies fluctuates quite a bit. So just take this with a grain of salt, as it were, depending on where we are with our currency exchange rate. This might be a little higher or a little lower, but these numbers stay the same for this term. So we're actually, if you include, so add these two together is where you would be, and that will lead us to about $21,000. So just keep that in mind, and that will increase sometime around September, but nominally. So if you compare across other institutions, we're quite low. It says here Algoma University offers the lowest international student fees than any other university in Ontario. So we're quite proud to offer accessible education, both cost and average wise. And let's talk about kind of the more fun side of the monetary needs. Let's talk about the scholarship. So this is specifically for students coming into a degree from high school. And it starts at a 60%. You get an automatic $500 reduction. If you are a top achieving student, 90% plus, and I should say that this is the 90% on the Canadian scale. So if you have, I can't remember exactly where it starts, but that's lower for the public school in Pakistan. But if it's 90% equivalent to Canada and you are scoring a 7.0 overall in the IELTS, you are eligible for this $5,000 renewable scholarship, which obviously goes a really long way. We've handed out more of these this year than any other year, so we're quite proud of the level of student achievement that we're seeing. If you have other questions about this slide, Education Concern are great resources, and they can kind of walk you through how this works. So I'll talk a little bit about housing. So this is something I'd like to give students a heads up on as early as possible. So housing in Canada is really tricky right now. It can be hard to find an apartment. It can be hard to find the room at the price you want. So when you're doing your budget, please consider that housing will cost at least, for a comfortable situation, $500 to $800 a month. So add that into your budget when you're making your plan. There is a residence for first-year students on campus of the Sault Ste. Marie campus, but not in Brampton. So the earlier you can start making connections with other students in the area, and that goes for if you choose a different university in Canada, it basically goes for every city in Canada right now. We're really feeling squeezed for housing. So just please keep this in mind as you're going through the application process. For some students, we can do homestay, which is where you live with a family, but this requires some foresight as well. So just a couple things to think about. The first-year residence is a great option if you just want to know that you'll have a good, clean place to stay close to campus. And of course, our residence building's right on campus, so it's only a 3-minute walk to class. And this is something you apply for after you receive your offer. So a great option. I'll talk a little bit about experiential learning. So experiential learning is everything that happens outside of the classroom. So what's wonderful about Algoma is our size. We are the second smallest publicly funded university in Canada. So that means we have all of the quality of a certified and credible institution held to the same standards as University of Toronto, any of the big name universities. We all have the same boss at the end of the day, but we have more resources because we have less students. So having less students means that there is more opportunities for you to get time with your professors, volunteer positions, competitive co-op placements. So that's kind of something to think about. What kind of experience do you want while you're studying overseas outside of the classroom? So that brings me to the end of the presentation, which is great because we're just about at 10:30. So I'm gonna, Farouk, I'm gonna pass it over to you and we can open it up to questions now. Would that work?
Farouk, are you there? Yeah, we are there. Yes, I'm here. Great. Okay, do you want to lead the question and answer period and maybe let me know which ones to start with? Yes, I think I should give information visa process. So, dear students, in 1-2 minutes, you will be able to understand about visa policy for Canada. So, Pakistani student will apply visa under SDS policy, Student Direct Stream, and we are lucky that Canadian government included Pakistani students in SDS policy, under which students are getting visa without any interview and without parents' bank statement. You just need to fulfill 3 basic requirements. Number 1, you must have IELTS with 6.0 or 6.5 overall and no less than 6 in any module. Number 2, you should deposit first year tuition fees in advance to the university. Number 3, which is the last, you will open your bank account in a Canadian bank, deposit 10,000 Canadian dollar for the living cost, खाने पीने रहने के लिए. अगर आप ये 3 कंडीशन पूरी कर दें, यानी IELTS, 1 year की tuition fees advance, 1 year की living charges खाने पीने रहने के लिए 10,000 Canadian dollar Canadian bank में, तो you can get your visa without any interview, without parents' bank statement, and in a month. Our students, luckily, our students are getting visa even in 12 days. One of the students got his visa, excuse me, in 6 days. So I encourage all of you to apply only under SDS policy. अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने O level या अमेरिकन एजुकेशन ली है, उनके लिए भी IELTS जरूरी है और सिर्फ IELTS का एग्जाम चाहिए. नो TOEFL, नो PTI, नो Duolingo, ओनली IELTS. और आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं, यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट बाय ईमेल. आपके एडमिशन में, आपके वीजा में स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस में एजुकेशन कंसर्न आपकी हेल्प करेगा. इवन ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट इन ए कैनेडियन बैंक, पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल, and submitting of visa application. So feel free to ask any question. That's all from my side. Hello, can we Yes, ask questions? Yes, please. वो असल में अभी जो गिवन था ना, ये ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है, डिप्लोमास, तो ये 6,000 स्कॉलरशिप ये सबको मिलती है या नहीं, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है? Yes, good question. Yes, आपके परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए. जी 75% है पाकिस्तानी उस हिसाब से. Okay, yes, you can get scholarship up to $5,000 अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है. तो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल पावर. असल में मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी कनाडा, प्रोसेस सारा कंप्लीट है, तो मैं वहाँ कनाडा आके ट्रांसफ़र कर सकता हूँ. ट्रांसफ़र नहीं, सॉरी, मतलब यूनिवर्सिटी चेंज कर सकता हूँ. ओके, पहले ये बताइए आपके CGPA कितना है? हाउ मच इज योर CGPA? 3.01, 75%. ओके, आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं. जी, तो सितंबर इनटेक के लिए अभी एडमिशन मिल जाएगा? नहीं, सितंबर इनटेक के लिए आप लेट हो चुके हैं. आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है? मैंने अभी एरिज़ोना रेजिना यूनिवर्सिटी है एक, और प्रोसेस जो स्टार्ट किया है वो कैलगरी के लिए किया. ओके, एंड किस प्रोग्राम में? ये कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग मास्टर्स. ओके ओके, राइट. ठीक है, आप ऐसा करें कंप्यूटर साइंस के लिए, बिकॉज टुडे वी आर only here for the bachelor degree and postgraduate certificates. So for the master degree, please call me at my WhatsApp number. मैं आपको WhatsApp number दे रहा हूँ. So अच्छा, वो शेयर कर दे काइंडली, तो फिर मैं जी मैं कर देता हूँ. Okay, most welcome. In chat box में. Dear students, please feel free to ask any other question. Sir, am I audible to you? Yes, please.
सो सर मैं कनाडा में नर्सिंग में मेडिकल में ना आना चाहता हूँ. I recently did my intermediate in 2021. So now can I apply in for September intake? Sorry, we don't offer nursing program. Okay, so like other medical related field, like We some offer other. biology, biology, biochemistry, bioengineering, biotechnology. You Mhm. can get admission, and even psychology. Psychology and biotechnology. So Yes. can I get like scholarship in these courses? Yes, you can. But what about your percentage in intermediate? 92 percentage. That's great. If you and what about your IELTS? So it's on 11th date, 11th May, about 1 Okay, week later. you can get $5,000 scholarship per year, which is renewable each year, if you have 7 band in IELTS. So you are a very good candidate. So obviously, sir, my target is to target is to get 8 bands at least. So, but what's the fee structure for annual? What's the fee for the Annual whole year? tuition fees is about 19 to 20,000 Canadian dollar. So if you get 7 band and you already have very good marks in intermediate, so you can get $5,000 renewable scholarship, which means So so after $50,000 scholarship, then. so after scholarship, your tuition fees will be about 15,000 Canadian dollar. Okay, so and is it 4 years program like This is the for yes, biotechnology? yes. Okay, This so is for for just in which university? Like Algoma? yes, Algoma. Okay, so sir, could you please tell me something about this university, like where it is situated, and then like some short intro about this university? Okay, why not? Yes, either you can give the information. Sure, yeah, I can go over it. A presentation on it, and maybe Farouk, if you want to share the presentation, you're welcome to share the slides as well. I'll send that to you. So Algoma University, we're located in Ontario, Canada, which is the center province of Canada. It's where most of the population of Canada resides. And we have 3 campuses spanning the province. So from the northern region down to the southern region near to the Toronto area. Is there anything in specific you wanted to know, Mohammed? So in specific, I want to know that where's your main campus situated? Like I want to apply in your main campus. So we don't really have a main campus. We have 2 fairly large campuses, and we have one kind of in an urban area in the Brampton region, so right downtown Brampton. And then we have one in Sault Ste. Marie, which is a lot more rural, smaller population size, does have more programs offered there because it's our flagship campus. But size-wise, they're about the same. Okay, so okay. Okay, that's it. That's all from my side. Thank you. Great, thanks for the question. So one last question. What is the minimum criteria for the scholarship? So the scholarship specifically for students coming right from high school into a degree program. So the minimum requirement is, I believe it's, So it's go not back to that. certificate? No scholarships available for the graduate certificate within our school. So you can always look for these externally. Sorry, Mohammed, would you mind, oh, here, I think. Oops, there we go. So yeah, so they start specifically for the degree programs only, direct from high school. But of course, you can search for scholarships externally as well. All right. Okay. Thanks. No problem. Thanks for the question. Ma'am, what about engineering programs? So we don't have any engineering programs for students coming directly from a third country or a second country. We have a first-year engineering course offered, but it's in partnership with a different Ontario university. And because of the differing immigration requirements and entrance requirements,
It's only for students living onshore. And it's only the first year. So, and the closest thing we have to like engineering would be like mobile software engineering within our computer science degree. Okay, ma'am, could you please tell me how the medical related courses you're right now offering? How much courses you are offering in related to medical? So we have a biology degree, and within that there is a health science specialization. I would note that if you're interested in pursuing medical, like if you're interested in medical school, this is something that takes international students in Canada a very long time to achieve, close to a decade. And that's because there's only, I think, 2 or 3 seats set aside for international students within our medical schools. And the medical schools are also incredibly competitive for domestic students. So I always encourage international students to start with even a college diploma within some kind of technical medical field, X-ray technician or something like that, then apply for their PR, then their citizenship, and then apply for medical because my background studies is related to medical, and that's why I went to pursue my studies to medical related field. Right. So nothing at Algoma specific to like medically related jobs, just because a general graduate degree. As you mentioned biology, but I pursue some skillful base, like some dentistry, some nursing. So is it any kind of course here about some skillful and some practical? Not at Algoma, but I would take some time to meet with Farouk and his team. They have some partnerships with other universities in Canada. Farouk, do you have any partnerships with schools that have nursing? Yes, University of Prince Edward Island. Mohammed, call me after this event. Where would I call you? On my WhatsApp. Yes, in the chat box you can see my WhatsApp number. Okay, WhatsApp number. Okay, that's no problem. Great, thanks for the question, Mohammed, and best of luck with that. Okay, ma'am. Thank you very much. In media studies, so I'm wondering if you're offering a media studies program. So I want to do masters. So is there any program you're offering in media studies? Hi, Ayman. So unfortunately, no, we're more of an undergraduate institution. We have a couple very general master's programs, but nothing specific to media studies. And graphic designing? Nothing in that field. Okay, thank you. Is there any program for the CS students? Let me just bring up that program page again. For those of you who maybe didn't see. So here's all of the master's program. Is there any? So this presentation today is actually specifically for undergraduate degrees and graduate certificates. So I can't really speak to master's programs, unfortunately. Here's this slide here is the entirety of our program offerings. So all of the programs that we have at Algoma, as well as a couple of our graduate certificates. Is anybody here, has anyone here already applied to Algoma? Any current applicants? Maybe not today. Any other questions for me today? Hello, ma'am. Is there any program related to literature in this university? Sorry, one more time. Is there any program related to literature or linguistic or language in this university? Yeah, so we do have a degree within English. So English degree would cover quite a bit of literature. You can, let me see here. I can show you one thing on our website here. Get out of here. So everyone can still see my screen, I think, right?
Let me just, Yes. I'm going to just pop over to our website if my VPN will let me. There we go. And I'll show you a couple helpful places on our website. If my internet lets me, there we go. So on our website here, we have this academic tab at the top. If you click that, you'll see this Home of the Registrar drop-down menu. And under there, we have the academic calendar PDF. This is something that every university will have somewhere on their website. And when you open this, it gives you an exhaustive list. So everything that we offer in the institution will be listed in here. It's kind of like the, the go-to guide for everything about the university. So if I bring up literature, it should bring up all of the courses that we have that offer literature. So we have some within the Indigenous Studies. We'll definitely have some within the English program. So this is kind of a really good place to start to look at that. As far as linguistic goes, we do have a beginner's French course, but nothing specific like to learning new languages. But within the field of English, you will touch on literature and kind of things to do with that field. Does that answer your question? Yeah, thank you so much. Yeah, you're definitely welcome, and use this resource as much as you can on the websites of universities. Perfect. Any other questions for me? Okay, so ma'am, one more question is from my side. Like, could you suggest me any other university in healthcare? You know what? I don't know too much about other universities. I'm specific to Algoma University, but I would highly suggest working with Farouk and his team for that. They have really close relationships with some excellent universities across Ontario and Canada. But I think as because you are a resident of Canada, so I think you know better than me. Mohammed, I please call honestly me have, after this event, okay? Okay, sir. Okay, definitely. Okay, definitely. yeah, I Thank you. graduated from Algoma. I've only ever worked for Algoma, so I don't know too much about the other universities. I will say that all publicly funded universities are held to the same standards, so you can't really make a bad decision if you go public. Okay. Great. Well, thank you everybody for joining me today. Farouk and I will be planning more of these shortly. And I suspect, Farouk, that I'll be making a trip to Lahore probably within the next, like maybe closer to fall. So I'll look forward to working with you and your team and hopefully seeing some of these prospective applicants in person as well. Thanks. Awesome. Any other last questions before I hop off? Awesome. And Farouk, did you have any closing remarks or Yes, thoughts thank for you this very evening? much. In fact, you gave us all the information in very simple way. So I think, and you covered each and everything. But dear student, I'm still available for any other question regarding IELTS, visa process. You can even ask question in Urdu. And on behalf of Pakistani students, I thank you, Mr. Heather, and I hope we will have another good session in coming weeks. Perfect. And I did just, I took a quick look at the questions, Farouk, and somebody asked, what is Anishinaabe studies? So I'll just quickly comment on that. So Anishinaabe Moan and Anishinaabe studies are the study of our Indigenous people here in Ontario. So Algoma University was founded by an Indigenous leader back in the 1800s.
And ever since then, we've worked really hard to keep this Indigenous language and culture alive through formal education. So it's a very interesting degree. It's also something that our government works really closely with. So if that's something you're interested in, it's certainly a beneficial field to study. Perfect. So Farouk, I'm gonna hop off now. I'm starting vacation today, so I'm getting ready to enjoy some sunshine in sunny California this week. Oh, yes. But I will be looking forward to our next webinar, and please loop me into any questions or concerns that students have when they come up with them. Thank you. Wonderful. Much. Thank you so Enjoy much. in California. Thank you so much. I will. Perfect. Yes, friends. अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. कैनेडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में 2019 में शामिल किया, जिसकी वजह से विदाउट पेरेंट्स बैंक स्टेटमेंट एंड विदाउट इंटरव्यू स्टूडेंट्स 21 डेज और 30 डेज में वीजा ले लेते हैं. और आपने सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है. नंबर 1, आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, लाइक आपने ओ लेवल ए लेवल किया है या अमेरिकन एजुकेशन है. You must have IELTS with 6.5 or 6 overall and no less than 6 in any module. Number 2, आपने 1 year की ट्यूशन फीस एडवांस में पे करनी है यूनिवर्सिटी को. एंड नंबर 3, आपने कैनेडियन बैंक में अकाउंट ओपन करना है और उसमें $10,000 कैनेडियन डॉलर जमा कराने हैं फॉर द लिविंग कास्ट, खाने पीने रहने के लिए. अमूमन ये $10,000 महफूज रहते हैं बिकॉज जाते ही आपको 1 वीक 1.5 वीक में या 2 वीक्स में पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, जिससे खाना पीना रहना आप इजीली कवर करना शुरू कर देते हैं. तो ये जो 10,000 है या इसमें से 9,000 जो आप या जितने भी आपने खर्च किए जो बाकी बच गए, वो आप नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस में यूज कर सकते हैं. और ड्यूरिंग स्टडी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं. ड्यूरिंग विंटर समर वेकेशन फुल टाइम जॉब कर सकते हैं. और आफ्टर स्टडी आपको 3 इयर्स का या 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा और उसके बाद पीआर मिल जाता है. एंड अल्गोमा यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट तमाम प्रोग्राम में को-ऑप की ऑप्शन शामिल है. को-ऑप का फायदा क्या है कि आप फर्ज करें आपके 8 सेमेस्टर हैं बैचलर डिग्री के, तो आप 6 सेमेस्टर पढ़ेंगे और 2 सेमेस्टर आप जॉब करेंगे, जिसकी आपको अर्निंग भी होगी. सो कोई क्वेश्चन है तो बताएं. आइल्स अगर आप लोगों ने करना है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं जो 7:30 पे रोजाना होती है जूम के ऊपर, आप वो अटेंड कर सकते हैं. और आई होप के तमाम स्टूडेंट जो भी अटेंड करेंगे या कर रहे हैं वो 6.5 बैंड आराम से ले लेते हैं. एंड सर व्हाट अबाउट सीजीपीए? अगर किसी का लो सीजीपीए हो तो भी वो भी अप्लाई कर सकता है? गुड क्वेश्चन. आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है और सीजीपीए कितना है? सर सीजीपीए तो मुझे अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जैसे एनुअल सिस्टम चलता है वो वाला है. सर इट वाज वेरी लो. मास्टर्स था इन इंग्लिश लिटरेचर. अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ. जी हाँ जी, कुछ इससे मास्टर डिग्री में एडमिशन के लिए 3 सीजीपीए चाहिए या 70% चाहिए. अगर इन किसी भी स्टूडेंट का बिलो है तो वो मास्टर में तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या प्रोफेशनल डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं. इससे नीचे नहीं होना चाहिए, लाइक सिंपल सर्टिफिकेट, सिंपल डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा. ये इसके लिए आप एलिजिबल हरगिज नहीं है. आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या प्रोफेशनल डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, ताकि आपको वीजा में कोई प्रॉब्लम ना हो. और आपकी अगर इंग्लिश में, मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में एक यूनिवर्सिटी रिकमेंड करता हूँ, सेंट मेरी यूनिवर्सिटी, और उसमें एक प्रोग्राम है, हो सकता है वो आपको एडमिशन दे दें. आपने बैचलर डिग्री कब मुकम्मल की थी? सर वो 16-17 सेशन में की थी. उसके बाद आप जॉब कर रही हैं? जी सर. ओके गुड. इस जॉब के एक्सपीरियंस की वजह से आपका काफी हद तक जो सीजीपीए है वो कवर हो जाएगा. सेंट मेरी यूनिवर्सिटी में आपका बैचलर डिग्री प्लस एक्सपीरियंस, इस बेस के ऊपर एडमिशन मिलेगा जनवरी इनटेक के लिए. और उनकी जो ट्यूशन फीस है तकरीबन $15,000 कैनेडियन डॉलर है.
Okay. ठीक है, Can you आप- repeat the name of the university, please? मैं आपको इसमें लिख देता हूँ चैट बॉक्स में। Okay. ये आप इसमें प्रोग्राम देख कर फिर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सेंट मेरी यूनिवर्सिटी smu.ca, ठीक है, ये इनका वेबसाइट है। सर Thank इंजीनियरिंग you, के sir. मुतालिक भी गाइड कीजिएगा। जी दोबारा बोले। इंजीनियरिंग के मुतालिक भी गाइड कीजिएगा प्लीज। यस, इंजीनियरिंग के लिए आपके इस वक्त आपकी क्या क्वालिफिकेशन है इस वक्त? मैंने इंटरमीडिएट किया है इसी साल। और कौन सी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? एरोस्पेस। एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ, आप अपना प्रोग्राम उसमें चेक करें और फिर व्हाट्सएप के ऊपर या ईमेल के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ठीक है, मैं चैट जज़ाकल्लाह। बॉक्स में लिख रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, ये टोरंटो के साथ ही सिटी है विंडसर, और इसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर डिट्रॉयट सिटी है अमेरिका का, और जीएम मोटर्स का हेडक्वार्टर भी डिट्रॉयट सिटी में, जो इस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है। और इंजीनियरिंग के लिए जीएम मोटर्स ने विंडसर यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर भी ओपन किया हुआ है। ये मैं आपको ये मैंने लिख दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का। आपका नाम क्या है जिन्होंने क्वेश्चन किया है, क्या नाम है? दस्तकार। ठीक है, ओके। इंजीनियरिंग। थैंक यू सर। परसेंटेज क्या है आपकी, दोबारा जरा बोलें परसेंटेज। 85। गुड। अगर आप 7 बैंड ले लें या 6.5 बैंड ही, तो होपफुली यहाँ से इस यूनिवर्सिटी से भी आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इनके इस वक्त अभी भी सितंबर इनटेक के लिए एडमिशन ओपन है। अगर ये आप मिस करते हैं तो नेक्स्ट इनटेक इनका विंटर 2024 है। तो जस्ट हैव ए लुक और फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कल रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। एनी सर अदर मुझे क्वेश्चन? कुछ और भी पूछना है। जी पूछिए। आपने जैसे मुझे लिटरेचर से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी बताई है, तो उसका कब तक है डेडलाइन एडमिशन वगैरह की? इनकी आप आइल्स कब तक कर सकती हैं? सर ये मई के लास्ट में या फिर इंशाल्लाह जून के स्टार्टिंग में। ठीक है, आप कोशिश करें एंड ऑफ जून तक आपका एडमिशन चले जाना चाहिए सितंबर इनटेक के लिए। ठीक है, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है आइल्स की? बैंड यू की? नीड 6.5 बैंड ओवरऑल, और किसी मॉड्यूल में 6 से कम ना हो। ठीक है। और 6.5 बैंड तभी आते हैं जब आप 7.5 बैंड की तैयारी करें। तो जी ये बिल्कुल राइट। फार्मूला आप Indeed. सबसे उनको याद रखना चाहिए। जी। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि ये सर आपने पूछा था आप जॉब करती हैं, तो जॉब किसी भी टाइप की हो सकती है या कोई स्पेसिफिक जॉब जो है वो आपकी बेनिफिशियल अपनी होगी? फील्ड में हो, इंग्लिश टीचिंग की फील्ड में हो तो बेहतर है। हाँ वैसे जी आप क्या बिल्कुल। करती हैं जॉब? जो मर्जी लेवल हो, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे मेरा है इंग्लिश ही है सब्जेक्ट। ठीक है, आप इंग्लिश ही पढ़ाती हैं बस, ठीक है, वो काफी है। जी। और ये तो अच्छी रीजन है कि आप इसलिए फर्म डिग्री लेना चाहती हैं ताकि फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सर्व कर सके पाकिस्तान वापस आके। ये एक अच्छी रीजन है। जी ठीक है। थैंक यू सर गाइड करने के लिए। मोस्ट वेलकम जी। कोई और क्वेश्चन? हस्कील, एक चीज और बता दूं आपको, एक यूनिवर्सिटी ट्रेंट यूनिवर्सिटी टोरंटो में ये भी इंजीनियरिंग कराती है, इसको भी देखें, और यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर को भी। इसके बाद फिर आपने मुझसे रब्ता करना है। जी सैयद तबस्सुम, आप बोल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एबटाबाद से हूँ जी।
सर मैंने ग्रेजुएशन की है आईटी में, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कंप्यूटर साइंस या आईटी से रिलेटेड जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, ओके, जी मैं उनके बारे में आपका इंफॉर्मेशन चाहता आपका सीजीपीए कितना है आपका? हूँ। सर मेरा 3.77 में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने बैच का। गुड गुड, कंग्रेचुलेशन। अच्छा, यू नीड थैंक यू। 6.5 बैंड या 7 बैंड ले तो बेहतर है, अदरवाइज 6.5 बैंड। और आईटी के लिए यूनिसेफ विंजर अच्छी ऑप्शन है, और दूसरी है कैन यू रिपीट सर प्लीज? यूनिसेफ विंजर। ये मैं ना आपको, आप मुझे चैट बॉक्स में अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख दें, मैं आपको भेजता हूँ जी यूनिसेफ विंजर। उसके बाद अल्गोमा यूनिवर्सिटी, जिसका आज सेमिनार था, आप थोड़ा लेट हुए हैं, ये भी कंप्यूटर साइंस कराते हैं और आईटी में कराते हैं मास्टर डिग्री। इसके जी सर। बाद ट्रेंट यूनिवर्सिटी है ब्रिटिश कोलंबिया साइड के ऊपर, और इसके अलावा सेंट मैरी यूनिवर्सिटी है नोवा स्कोशिया में, हैलिफैक्स सिटी में। हमारे पास तकरीबन 23 यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं कनाडा में जो हमारे पार्टनर हैं, तो आप किसी में भी जा सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताई है इनको जरा देखें, अपना नाम जरा इसमें भेज दें, तो मैं, जी आपने हकील भेजिए, मैं आपको भेज दूंगा, इनके वेबसाइट एड्रेसेस भेज दूंगा। श्योर सर। आप बस आप आइल्स के ऊपर तवज्जो दें और तबस्सुम। आपका जी सर। जो इनटेक होगा वो विंटर 2024 होगा मास्टर डिग्री के लिए। जी सर। और सर जीआरई की रिक्वायरमेंट तो नहीं है इसमें? नहीं, जीआरई की रिक्वायरमेंट कनाडा में नहीं है, अमेरिका में। जी मोहम्मद आरिफ, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद आरिफ बोल रहा हूँ। जी। अच्छा, मैंने पूछना था कि मेरे बेटे ने ये 2022 में ग्राफिक डिजाइनिंग में बीएस किया है, सीजीपीए ओके 3.17। ओके, गुड। तो उसके लिए कोई स्कॉलरशिप वाला कोई है ऐसा कोई प्रोग्राम, या अगर स्कॉलरशिप के अलावा कोई है तो उसकी फीसें मेरा क्या हिसाब था? जी, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी थोड़ी सी इकोनॉमिकल है। मिनिमम एडमिशन की रिक्वायरमेंट 3 सीजीपीए है, आपके बेटे का थोड़ा सा बेहतर है। और जो इनकी स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है समटाइम 3.8 3.7, इनको ये दे देते हैं कुछ ना कुछ $2,000-3,000 तक। बैचलर लेवल के ऊपर ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, 5,000-7,000 तक मिलती है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है ग्राफिक डिजाइनिंग से रेलेवेंट, आप इसी में मास्टर डिग्री करना चाहेंगे? जी जी, ठीक है, तो आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर एक है यूनिवर्सिटी, इसको देख लें आप। फिर अल्गोमा यूनिवर्सिटी की ये क्वालिटी है कि ट्यूशन फीस बहुत रीजनेबल है, 20,000 कैनेडियन डॉलर। इसी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की फीस बाकी यूनिवर्सिटी में 30,000, 35,000, 40,000 तक है। तो सबसे इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी में ये शामिल है। ये 20,000 जो है ये 1 ईयर की है या होल है? जी 1 ईयर की है और कैनेडियन डॉलर है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ये रवा से बोल रहा हूँ। ओके, तो ये 20,000 1 ईयर की ट्यूशन फीस है। इसके अलावा $10,000 आपने कैनेडियन बैंक में जमा कराने हैं फॉर द लिविंग कॉस्ट, जिसके मतलब मैंने पहले भी गाइड किया है कि पार्ट टाइम जॉब मिलने की वजह से ये पैसे काफी हद तक महफूज रहते हैं, जिसको आप नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आइल्स का जरूरी है? मस्ट है जी, बिल्कुल। गुड क्वेश्चन जी आपका। कनाडा के लिए आइल्स मस्ट है। यूके में विदाउट आइल्स जा सकते हैं, लेकिन कनाडा में आइल्स मस्ट है, अमेरिका में मस्ट है, ऑस्ट्रेलिया में मस्ट है। तो यूके में ये ग्राफिक का है कोई वहाँ पे फ्यूचर या? बिल्कुल है, किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन है, फिर मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन है, डी माउंट फोर्ट यूनिवर्सिटी लंदन है, काफी यूनिवर्सिटीज हैं। और आप अगर यूके का आपका माइंड बनता है तो सितंबर इनटेक आपको आराम से मिल सकता है। तो ये
यही पूछना था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आता है कि फाइनेंशियली मेन प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल, जी तो उस लिहाज से कोई इकोनॉमिकल कोई हो यूनिवर्सिटी या कंट्री। जी, यूके में अगर देखा जाए तो आप ट्यूशन फीस 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, बट बैंक यस स्टेटमेंट आपको शो करनी है बहुत हैवी किस्म की, लाइक 65 लाख की, एक 1 यस मंथ के बैलेंस के साथ, जिसे 28 डेज का बैलेंस भी कहते हैं। जी। जी तो ऑस्ट्रेलिया में इस फाइनेंशियली कोई है रिलैक्सेशन? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ट्यूशन फीस थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कनाडा। आप यूँ यस समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया में एक सेमेस्टर की फीस इतनी है जितनी कि कनाडा में 2 सेमेस्टर की फीस होती है। अच्छा अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में कॉस्टली है। कॉस्टली है, और आइल्स भी Yes. मस्ट है। अच्छा, तो आइल्स मिनिमम कितना होना चाहिए? 6.5 एंड ओवरऑल, और किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम ना हो। नहीं हो? अच्छा ठीक है, थैंक्स वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो ये जो फाइनेंशियली और जो बाकी ये स्कॉलरशिप वाला कोई प्रोग्राम है, उसका मुझे लिंक भेज सकते हैं कुछ? जी मैं आपको भेज देता हूँ। आप चैट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर छोड़ दें। जी ठीक है, ठीक, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। जी, कोई और क्वेश्चन? नहीं तो अब इसको फिनिश करते हैं इवेंट को। और इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी मेरी है। किसी को भी एडमिशन लेना है तो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर या व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये मैंने चैट बॉक्स में आपको सबको मिल गया है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी हाजिक अहमद, आप लेट आए हैं, अब इवेंट खत्म होने वाला है, लेकिन आप मुझे बता दें आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है और परसेंटेज या सीजीपी आपका कितना है। जी मोहम्मद आरिफ साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्वेश्चन कर लें। और हाजिक, अगर क्वेश्चन कोई है तो कर लें, नहीं तो फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल में तमाम के आंसर सबको मिल गए हैं। सो ठीक है जी, आपको जो इंफॉर्मेशन आज मिली है इसके मुताबिक नेक्स्ट डे कल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर।